Okay. So we'll continue with the same PDF from yesterday. We'll continue with the same PDF from yesterday, and we'll do this sum. Okay, Borough High and Street, Borough High and Street. Okay. Everyone was able to do yesterday's sum now. The balance sheet is tallying. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let us check. And what happened? Only 36 participants today because of weekend. कल आज बोला था पूजा ना आज वगैरह क्लास भी है है. ना, आज पूजा वगैरह भी है ना. कल है ना वो दशहरा का पूजा कल है, आज कुछ नहीं है. सर आज नवमी है. हाँ सर, आज पूजा तो है. आज नवमी है. हाँ तो तुम लोग थोड़ी ना पूजा करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स पूजा करते रहेंगे ना. सर पूजा हो रही है बट हम यहाँ बैठे हैं. Exactly, सर हम भी बैठ. अच्छा बैठते हो तुम लोग. ठीक है ठीक है हाँ चलो. सर. गुड गुड. पास होना है ना सर. हाँ हाँ इसलिए क्या, अदरवाइज नहीं. पास होना इम्पोर्टेंट है, भगवान तभी याद आते हैं. अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं. So I am anyway recording the lecture. So who all are missing out today, they can see the lecture. Okay. So now associate adjustment and provision adjustment other than perp. So there can be other provisions also. Huh? We have seen provision of unrealized profit. We have seen perp, but there can be other provisions also. Okay. तो थोड़ा सा IAS का concept भी हम लोग apply करेंगे. Okay. Let us read the question first. Summarized financial statements for 3 entities for the year ended 30th June 2018 are as follows. Borough High and Street. So 3 company है. So we'll have to see which is parent and subsidiary. We'll have to see which is parent and associate. PPE दिया है, investment दिया है, inventories दिया है, receivables is given, cash and cash equivalent is given, equity capital is given, retained earnings is given, OCE, other components of equity is also given separately. Okay, and liabilities is given. On 1st July 2017, ठीक है. So year ended कब है? 30th June है, and acquisition is 1st July. So it is 1 year before. Acquisition is just 1 year before. Okay. So on 1st July 2017, Borough purchased 45,000 shares in High for $100,000. At that date, High had retained earnings of 30,000 and no other components of equity. Now, I think you guys are familiar with this. High's net asset had a fair value of 1,20,000 and the fair value of non-controlling interest was 55,000. Okay. It is a group policy to value the non-controlling interest at acquisition at fair value. The excess of fair value of High's net asset over the carrying amounts at the acquisition date relates to property, plant and equipment. Okay. So now see, they have given High's net assets had a fair value of 1,20,000. Okay. And they are also given the excess of fair value of the High's net assets over their carrying amounts at the acquisition date relates to only what? Relates to only property, plant and equipment. Okay. So it does not relate to any other asset. It does not relate to any other asset. Okay. Now, this had a remaining estimated useful life of 5 years at the acquisition date. So depreciation के लिए फायदा होगा उसका. And goodwill has been subject to an impairment review and it was determined to be impaired by 7,000. Okay. On 1st July 2017, Borough purchased 10,500 equity shares in Street. Street का अलग से करेंगे. First, let us focus only on Borough and High. First, let us focus only on Borough and High. During the year, Borough sold goods to High for $10,000 at a margin of 50%. By reporting date, High had only sold 80% of these goods. क्या हो गया ये? अभी देखा था हम लोग ने. Downstream parent has sold to subsidiary and subsidiary has not sold 100% of those goods. So perp निकालेंगे. Included in the receivables of Borough and the liabilities of High are intra-group balances of 5,000. What do we do with intra-group balance? Cancel it off. Cancel it out. So deduct from receivable and deduct from payable. And there is only 5,000. They have not given 4,000 and 5,000. So cash in transit of 1,000. वो सब logic नहीं है. Simply 5,000 from payable, 5,000 from receivable. Okay. On 5th July 2018, Borough received notification that an employee was claiming damages against them as a result of workplace accident that took place on 30th April 2018. Lawyers have advised that there is 60% chance that Borough will lose the case
and will be required to pay damages of $30,000. Now, what is this paragraph relates to? Yes, what does this paragraph relate to? Is it actual loss? Is it an actual loss? So contingent liability. Okay. It could have been contingent liability. It could have been contingent liability. But what is their estimate? What is the probability? So 60%. So it is probable. हाँ 60% प्रोबेबल है, मतलब उसको हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे. We'll have to take it as what? We'll have to take it as a provision. Okay. When we are assured, assured by more than 50%, when we are assured by more than 50%, we will make a provision and we will not show it as a contingent liability. अभी देखो, नॉर्मली प्रोविजन का, अच्छा ये प्रोविजन किसका है? इज इट पेरेंट कंपनीज प्रोविजन और इज इट सब्सिडरीज कंपनी प्रोविजन? The parent company. It is parent company's provision. So tell me what can be the two effects of this provision? Normally final accounts में जो provision के दो Group हाँ So deduct from group reserves. correct, because it is parent company का provision, it will be deducted from parent company's P&L, means it will be deducted from group reserves. और लाइबिलिटीज में जाएगा बराबर, और लायबिलिटीज में जाएगा, और लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा. इट विल गो इन करंट लायबिलिटीज दैट वी हैव अ प्रोविजन ऑफ 30,000. अगर ये 40% चांस होता तो सर फिर फुटनोट्स में डिस्क्लोज करते हैं. परफेक्ट. सो we would have made a disclosure to accounts and we would have not recorded this in consolidation, but disclosure में contingent liability में हम लोग ने दिखाया रहता. So contingent liability does not appear, but provision will appear in your consolidation as well. ठीक है. So right now let us focus only between parent company and subsidiary company, and then associate का हम लोग बाद में करते हैं. ठीक है. Let us start. थोड़ा सा अलग है ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा अलग है. वर्किंग नोट 2 थोड़ा सा अलग है. Let us see. So solution to question 7. Question 7. Working note 1 is our group structure. Okay. How much has Borough company held in high? $45,000 shares out of टोटल शेयर्स कितने हैं? 75,000 शेयर्स हो गए क्योंकि $1 So 60%. करेक्ट. सो बरो इन्वेस्टमेंट इन हाई, बोरोज इन्वेस्टमेंट इन हाई इज 45,000 shares out of total of 75,000 shares. 75,000 shares. करेक्ट. मतलब कितना हो गया? 45/75 हो गया रेशियो. 60% हो गया. So if 60% is holding, मतलब क्या हो गया? So Borough and High, so sorry, High is a subsidiary of Borough. High is a subsidiary of Borough. Okay, so 60% is holding. 60% is holding. तो 40% बन गया NCI. 40% will be NCI. Simple. Borough और street का बाद में देखेंगे. The relation between borough and street, we'll see it later. Now, working note 2. Working note 2. First, we'll calculate the perp, because before we start calculating the net assets, we need the amount of perp, right? Before we calculate the net assets of the company, we'll need the amount of perp. So what they have said? perp किसके थ्रू है? perp is between borough and high है, तो नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा perp हम लोगों को. Okay, will not require it right now. If the perp was between high and borough, so goods were sold by high to borough, तो perp आया रहता अपना net assets में, and we would have done the perp right now. Okay, पर अभी हम लोग पहले करेंगे net assets. We'll do net assets of subsidiary company.
So for that I need on date of acquisition and I need on date of reporting. On date of reporting. ठीक है. So now you guys try this. You guys try this. ये fair value का थोड़ा सा अलग adjustment है. So try doing the adjustment. Let us see if we can do it. On date of acquisition, I want net assets of subsidiary company on the date of acquisition and on the date of reporting. सर एक डाउट है, हाँ बोलो. जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है वो हम शेयर प्रीमियम बोलेंगे ना उसको? Other components of equity can be anything, na? It can be your share premium, it can be your any kind of reserve, group reserve हो सकता है, तुम्हारा foreign exchange reserve हो सकता है. So P&L and other components of equity बनाते हो ना तुम लोग. So OCI में के जो भी adjustment है वो कहाँ जाते हैं? That will be other components of equity. That will be recorded under other components of equity. So other components of equity also forms part of your reserves and surplus, huh? Yes. Okay, so net asset means what? Net assets mean equity plus reserve plus adjustments, right? So No. equity में अपना share capital है, equity में share capital है, okay? And reserves में क्या क्या है इस बार? Retained earnings भी है and OCE भी है. So retained earnings is also there, retained earnings is also there, and other components of equity is also there, okay? And adjustment में हम लोग का है fair value adjustment. Fair value adjustment on PPE, right? And depreciation on fair value adjustment. Okay, so therefore we'll get net assets of subsidiary company on date of acquisition and on date of reporting. Okay, so reporting का दिया है balance sheet में. Equity is 75,000. Correct. Retained earnings is 50,000. And other components of equity है 5,000. Okay. Share capital में तो कोई change नहीं है, so share capital will remain 75,000. And let us read the question. On 1st July, that is on acquisition date, High had retained earnings of 30,000 and no other components of equity. Okay. So on acquisition date, they had retained earnings of 30,000, correct? And no other components of equity, मतलब OCE zero था. OCE was zero. Okay. Now pay attention. Huh? High's net asset had a fair value of 1,20,000 and the fair value of non-controlling interest was 55,000. The excess of fair value of High's net asset over their carrying amount at the acquisition date relates to PPE. Okay. And it will have a useful life of 5 years on acquisition date. तो मेरे को बताओ fair value adjustment कितना है? Tell me the amount. 15,000. 15,000. Okay. कैसे आया 15,000? Oh, 1,20,000 will come in the net assets of subsidiary. Correct. It is the total. They have given the total value of net assets, right? Oh. They have said High's net asset had a fair value of 1,20,000. So High's net asset had a fair value of 1,20,000. So ये on date of acquisition का उन्होंने दिया हुआ है. This is already given to us. So adjustment on PPE will be your balancing figure. Adjustment of PPE will be your balancing figure. So that will be 1,20,000 minus 75 minus 30 and minus 0. 15,000 will be your fair value of PPE. See if this is clear. Yes or no? Yes. Yes, sir. Correct. So देखो
You have to read it properly. Now, they have not said that fair value is excess of 1,20,000. They have not said that fair value is in excess of 1,20,000. And it is very, very logical. Huh? It is very logical. अगर पीपीई का अभी का वैल्यू 1,00,000 है, ठीक है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 1,20,000 थोड़ी ना होगा. पीपीई राइट नाउ पीपीई इज 1,00,000, so fair value adjustment cannot be 1,20,000. Okay, so they have given high's net asset had a fair value. So they have not given high's adjustment of net asset had a fair value of 1,20,000. They have given high's entire net asset had a fair value of 1,20,000 on this date. So on date of acquisition, net asset का value 1,20,000 है, तो fair value adjustment on PP will be balancing figure 15,000. यही 15,000 reporting date पे भी लिखेंगे 15,000. Same will carry to reporting date. Very clear? Yes sir. Yes, sir. Now depreciation तो simple है. कितना life है asset का? This had a remaining estimated useful life of 5 years at the acquisition date. ठीक है, remaining life is 5 years. For how many years we want to do in this problem? For 1 year. 1 year. Acquisition was only 1 year before. If acquisition was 2 years before, we would have done 2/5. But in this case, acquisition is just 1 year before. So we'll do 1/5. So this will be 15,000 into 1/5. 3,000 negative. 3,000 will be negative, right? So net assets of subsidiary company on reporting date will be a total of all of these 1,42,000. See, in every problem we have taken, there is some or the other different adjustment in net assets. कल के problem में उल्टा था, impairment of goodwill was not given. So first we calculate goodwill, then calculate the impairment amount, and then put that impairment amount over here on the reporting date, and then we calculate the post acquisition profit. Okay, so take care while you calculate the net assets of the company. You have to take care about that. Okay, so now we got both the figures. So now we'll get post acquisition profit. We'll get post acquisition profit will be the difference of 1,42,000 minus 1,20,000, and this post acquisition, so it will be split in the ratio of, क्या था ratio? 60% जाएगा अपना 60-40. हाँ, 60% will go to holding company and 40% will be your NCI. Okay, so here only you can do 22,000 into 60% and 22,000 into 40% into 40%. Okay, done. Working note 2 is done. So now अपना main working note, whether we have gained or lost on acquisition, that is in short goodwill है या capital reserve है, goodwill है या capital reserve है. Okay, so we'll start with what? Fair value of purchase consideration. Fair value of purchase consideration actually paid, so this is actually paid. Then we'll add fair value of NCI, which is payable. So we'll get the total amount in hands of parent. Total amount in hands of parent. सर एक चीज पूछनी थी. सर हमने कल एक चीज ये देखी थी, 100% गुडविल वाज impaired and we discussed that it was at par. ठीक है, तो सर ऐसे तो कोई बिजनेस होता होगा ना, दोनों तरफ किसी को फायदा ही नहीं होता होगा उस चीज में. क्यों नहीं होगा? Is goodwill the only thing that decides that have we gained or lost on acquisition? No, na, because there might be a chance that the company that I'm acquiring has impaired 100% goodwill. ठीक है, बट उसके कोई इंटेंजिबल, दूसरे इंटेंजिबल असेट्स हैं जो मेरे कंपनी को नीडेड है. So my company feels that even though there is no amount of goodwill, okay, but the other intangible assets, let us say technical know-how, how to run machinery, is the expertise of that subsidiary company. तो वो तो मैं acquire करूंगा ना, कंपनी जब acquire करूंगा तो. Okay, correct. So apart from goodwill, there can be many factors, many other factors which also decide whether we have gained or lost on that acquisition.
ओके Understood. इसलिए तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिया ना हम लोग ने, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने किया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. लाइक इन द यस्टरडेज प्रॉब्लम देयर वाज अ ब्रांड वैल्यूएशन, करेक्ट. सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करने के बाद आफ्टर एक्विजिशन देयर वाज अ न्यू ब्रांड, वो कुछ तो मिंट फ्रेश या कुछ तो बराबर. मिड फ्रेश था. बराबर मतलब वो क्या हो गया, वो इवन दो गुडविल वाज इम्पेयर्ड फिर भी मेरे को फायदा हुआ. क्या हुआ? क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करने के बाद मैंने उनका नया ब्रांड भी ऑटोमेटिकली एक्वायर कर दिया. Okay, so apart from goodwill also there can be some or the other gain or loss which is shown over here in the fair value adjustment, correct. And that's why this becomes a post acquisition profit, उसका 60% हमको मिलेगा फिर. All right. Okay. So less net assets of subsidiary company on date of acquisition of subsidiary company on acquisition. Purchase consideration दिया है क्या, देखो प्रॉब्लम में डायरेक्टली इट्स गिवन. बोरो परचेस 45,000, हाँ बोरो परचेस 45,000 शेयर्स इन हाई फॉर 100,000, तो सिर्फ कैश वाला कंसीडरेशन है, इट इज ओनली कैश कंसीडरेशन. तो 100,000. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वो भी निकाल के दिया हुआ है. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 55,000. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 55,000. सो टोटल पेएबल इज 1,55,000. ठीक है. ओके सो नेट असेट्स हम लोग ने वो भी निकाला ऑलरेडी. नेट असेट्स फ्रॉम वर्किंग नोट 2. वर्किंग नोट 2 से लिया. कौन से डेट का लिया? एक्विजिशन डेट का लिया 1,20,000. सो कंपनी जिसका वैल्यू 1,20,000 है, वी आर पेइंग देम 1,55,000, मींस वी आर पेइंग देम एक्स्ट्रा फॉर देयर गुडविल. वी हैव लॉस्ट एंड दैट अमाउंट विल शो इट एज गुडविल. ठीक है. इंपेयरमेंट है क्या गुडविल का कुछ? कितना है? 7,000. So less goodwill impairment, less goodwill impaired 7,000. Okay. Now this impairment is also lost after acquisition. So split between holding and NCI. Between holding को जाएगा 60%, NCI को आएगा 40%. So holding will be 7,000 into 60% and this will be 7,000 into 40%. Done. Therefore, goodwill carried to balance sheet, goodwill carried to statement of financial position will be 28,000. Okay. बढ़ते आगे. Working note 4 क्या आएगा? NCI. And working note 5 will be group reserves. Working note 5 will be group reserve. ठीक है. So NCI में क्या आएगा? Payable to NCI. फिर add profit share of NCI and less share of loss. So payable to NCI we already calculated. In working note 3, payable to NCI is 55,000. Add profit share. How much the profit share? Post acquisition profit का 8,800 and loss share is goodwill impairment का 2,800. Okay. So NCI carried to balance sheet. NCI carried to balance sheet will be the sum of these three. ओके. नेक्स्ट ग्रुप रिजर्व करते हैं अभी. सो ग्रुप रिजर्व में वी स्टार्ट विथ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी. ओके. कितना है वो? 2 लाख. अच्छा 2 लाख लेंगे या 2,10,000 लेंगे? फेस वैल्यू पे लेंगे ना. फेस वैल्यू कहाँ पे आता है प्रॉफिट्स में? सो माय क्वेश्चन इज रिटेन अर्निंग्स में 2 लाख लेंगे या अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी भी ऐड करेंगे?
सर वो तो ग्रुप ऐड करेंगे। हाँ, सर क्या हो आपकी गया? तरफ से कोई Sir, बस का साउंड आ रहा है। other components are not there, It is sir. not from my side. The buzzing amount noise is not from my side. ओके It's from someone else's सर, side. हाँ. OCE भी लेंगे। Correct. We'll take both because group reserve they have said ना, they have not said group retained earnings. Correct. So group reserves में हम लोग all profits लेंगे, reserves of parent company लेंगे. So that will be what? That will be retained earnings plus your OC. So generally, okay, in real life we will show them separately. हाँ, group reserve हम लोग दो पार्ट में करेंगे, retained earnings का अलग से करेंगे, OC अलग से करेंगे. But FR में it is okay. Okay, it is allowed that you show it as a combined figure. Okay, FR में इतना तुम लोग को डिटेल में नहीं देखेंगे, but in real life you need to show retained earnings separately and you need to show other components of equity separately. ठीक है, तो यहाँ पे combine दिखाया तो भी चलेगा, separately दिखाया तो भी चलेगा. Okay, so that is reserves of parent company, group reserves में. Then what we'll do? Add profit share. Add profit share. Profit share of subsidiary less share of loss of subsidiary, share of loss of subsidiary. Okay, so profit share of subsidiary दिया है हम लोगों को. What is the profit share? 60-40 ये 60% post acquisition का, and loss share is 4,200. Okay, apart from this loss, is there anything else that we need to adjust in this thing? Parent perp भी है और एक provision है ना इस बार तो. So we have perp also and we have that other provision also. Correct. So we'll adjust. So less perp, working note 6 करते हैं उसको, working note 6, and there is one more provision, less provision वर्किंग नोट जो भी है 7, वर्किंग नोट 7. करेक्ट. थोड़ा जगह छोड़ दो क्योंकि हम लोगों को एसोसिएट का भी तो एडजस्ट करना है. अभी तक वी आर ओनली डूइंग बिटवीन पैरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. वी आर नॉट डन बिटवीन पैरेंट एंड एसोसिएट. सो लीव अ स्पेस, लीव सम स्पेस, एंड देन वर्किंग नोट 6 पर. ओके, सो इट इज अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन फ्रॉम पैरेंट कंपनी टू subsidiary company. Correct, it is from parent company to subsidiary company. So two effects क्या आएंगे? First effect will be in your group reserves. First effect will be in group reserve, and second effect will be in inventory. Second effect will be directly in inventory. राइट. ठीक, देखते फिर कितना है पर अमाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर? टेल मी. 4,000. ठीक है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है? 1,000 इज द they are sold for 1,000 at a margin of 50%. They have not said at a markup of 50%. मार्कअप है तो कॉस्ट पे आएगा, मार्जिन है तो सेल्स पे ही आएगा. If this was at a markup of 50%, it would have been 10,000 into 50 by 150. Correct? It would have been 10,000 into 50 by 150. So यहाँ पे क्या बोला है? उन लोगों ने बोला है it is at a margin of 50%. So profit कितना हो गया? Profit is equal to 10,000 into 50%. 50%. So अपना profit हो गया 5,000. But I don't want profit. I want profit on unsold goods. I want profit on unsold goods. Okay, so आगे पढ़ते हैं. I had only sold 80% of those goods. 80% सेल किया है, 80% अनसोल्ड नहीं है. 4,000 कैसे आया तुम्हारा? 80% is sold. 80% is sold means 20% is unsold. 20% is unsold. हम लोग को अनसोल्ड पे लेना है. So this will be perp will be 5,000 into 20%. 1/3 आएगा. Perp will be 1,000. ठीक है. हाँ, I'll repeat the markup and margin वाला concept once again. If they had said in this problem, they had said 10,000 were sold at a
मार्कअप ऑफ 50%, ओके, एंड दूसरा बोल सकते हैं 10,000 वेर सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 50%, करेक्ट. So markup is always on cost. Markup is profit that is applied on cost, profit percentage applied to the cost, okay, and margin is always profit percentage applied on sales, correct. So अगर cost पे है, correct, so cost plus markup gives me what? Gives me sales. So cost 100 है, मार्कअप 50 है, तो सेल्स कितना हो गया? 150 हो गया. तो हम लोग ने कितना किया? 10,000 का सेल किया है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? प्रॉफिट मार्जिन विल बी 10,000 into 50 by 150. ओके, सो व्हेन दे से इट इज एट अ मार्कअप, सेल तो 10,000 का है पर कॉस्ट पता नहीं है. सो इफ इट इज मार्कअप ऑफ 50%, विल डू इट दिस वे, ओके, 10,000 into 50 by 150. ओके, पर अगर वो मार्जिन है तो सिंपल है, कॉस्ट फिर तुम्हारा मार्जिन एंड सेल्स. मार्जिन इज 50% ऑफ सेल्स, तो 150, करेक्ट, और कॉस्ट हो गया तुम्हारा 50. ओके, सेल्स कितना है? 10,000. सो हम लोगों को मार्जिन चाहिए, ओके, हम लोगों को मार्जिन चाहिए था. सो दैट विल बी व्हाट? 10,000 into 50 by 100. सो डायरेक्टली 10,000 into 50% किया तो भी चलेगा. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. सो ये हटा देता हूं मैं. सो दिस वाज 5,000 into 20%, 1,000. ओके, सो पर्प आ गया इधर, -1,000 विल बी योर पर्प, एंड सेकंड इफेक्ट विल गो इन इन्वेंट्री. तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब इन्वेंट्री में हम लोग उसको डाल देंगे, विल पुट दैट इन इन्वेंट्री. नेक्स्ट, similarly there was another provision also. There is another provision. What is that provision? Working note 7. On 5th July, Bureau received notification that employee was claiming damages against them as a result of workplace accident that took place on 30th April. Lawyers have advised that there is a 60% chance that Bureau will lose the case. Okay. So there is a contingent liability. That company will lose a case. Correct. However, the probability is 60%. Probability is 60%. So it is a very high probability. So we cannot treat it as contingent liability, and we have to treat it as current liability, and in bracket you can write down provision. सर किस परसेंटेज से हम लोग उस चीज को क्लासिफाई करेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है? 50% के ऊपर गया तो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है. If it is more than 50%, contingent liability नहीं होगा. If it is less than 50% or exactly equal to 50%, we will show it as a contingent liability. ठीक है. That is again on the discretion of auditor. Sometimes auditor will say 60% liability को भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको contingent liability ही दिखाएंगे, क्योंकि देखो अमाउंट अगर बहुत ज्यादा होगा ना तो 60% होने के बाद भी कंपनी का ऑडिटर उसको कॉन्टिंजेंट दिखाने का ट्राई करेगा. जैसे वोडाफोन का केस हो गया था, 4,000 करोड़ ऑफ टैक्स लायबिलिटी जिसका केस चालू था. ब्रो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखा दिया. उनको पता था कि 100% चांस प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को, बट स्टिल ऑडिटर शोड इट एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. मतलब तब तक अपना शेयर्स का प्राइस अफेक्ट नहीं होता है फिर. Understood. But then what you are doing here, you are not doing creative accounting, correct? तुम लोग ने इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं किया, ये तुम्हारा फ्रॉड हो गया, कंपनी को फ्रॉड हो गया वो. तो जब कंपनी का पेमेंट आया, कंपनी को पूरा इंटरेस्ट के साथ टैक्स भरना पड़ा, एंड शेयर होल्डर्स वर वेरी अनहैप्पी दैट हम लोगों को पहले क्यों नहीं बोला था. ओके, सो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, 50% से ज्यादा है तो प्रोविजन मानेंगे.
रियल लाइफ में ऑडिटर कैसे भी उसको डील कर सकते हैं। ओके, ऑडिटर को पैसा खिलाओ, वो तुमको प्रोविजन करके नहीं दिखाएगा, वो तुमको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करके दिखाएगा। तो तुम लोग करोगे ना ऐसा, पैसा देंगे तुम लोगों को तो तुम लोग भी प्रोविजन करके नहीं दिखाओगे? नहीं सर। ठीक, पैसा सब बोलता है। ठीक है, चलो। सो नाउ विल शो दिस एज प्रोविजन। सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी योर provision will be shown under group reserves. Q, because it was a liability of parent company. अगर ये liability subsidiary company का रहता तो कहाँ दिखाए रहते? क्या हो गया सर, वापस बोलना। If the liability was not of parent company, if the same case was of subsidiary company, then Net assets. Net assets, correct. We would have shown it under net assets on what date? Acquisition date or reporting date? Reporting. Reporting date, बराबर ना? ठीक है, it will be shown as on the reporting date. Okay, next. Second effect will be in your current liabilities and provisions. Okay. So कितना amount? What is the amount? 30,000. So 30,000 दिखाएंगे क्या? 30,000 का 60% दिखाएंगे? 30,000. हाँ, we'll show 30,000 because 60% is not the amount. 60% is the probability. So if higher probability, we have to show the entire amount. Okay. So 30,000 दिखाएंगे. 30,000. We will show provision as 30,000. Okay. And second effect will go in your this thing, current liabilities and provisions. Okay. Next. So now parent company का सब हो गया क्या? चेक कर लो एक बार. If you have adjusted everything for parent company. Okay. Next. So now let us do it for transactions between borough and street, that is parent company and associate company. तो पहले तो देखते ग्रुप स्ट्रक्चर में. Borough purchased 10,500 equity shares in street for $21,000. Correct. So 10,500 out of 35,000. So working note 1 में देखेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर में, और we can show it separately. इधर जगह नहीं, separately भी दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. Between your parent company and associate. Okay. Borough company. Borough is holding how many shares? 10,500 shares out of, what is the total shares of street? 35,000 shares. Out of 35,000 shares. Okay. So that is 10,500 divided by 35,000. So 30%. Okay. So all post acquisition profits or losses of associate company will be shown at 30% in the hands of parent company. Okay. देखते हैं फिर, लेट अस सी. सो हम लोग वर्किंग नोट 8 भी बनाएंगे. याद है क्या कल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किया था अपन ने? हाँ सर. ओके. सो हाउ मच द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? 30. अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है प्रॉब्लम में. कितना है? Second paragraph. On 1st July 2017, Borough purchased 10,500 equity shares in street for 21,000. शेयर प्रीमियम भी है. ठीक है ना, शेयर प्रीमियम अलग से दिखाएंगे ना. We show share premium as a percentage profit, right? So actual amount invested is 21,000. What if this 21,000 amount was not given? तो कैसे निकाला रहता? इक्विटी कैपिटल में 1 शेयर का अमाउंट नहीं. इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते. Perfect. Investment 1,21,000 है. Investment was 1,21,000. Out of that 1 lakh has been invested in high. तो बचा हुआ amount we would have assumed that it has been invested in street. So पूरा का पूरा 21,000. 1,21,000 minus 1 lakh.
this 21,000 we would have taken as investment in associate. Correct? That is 21,000. So even if it is not given, you can calculate. अभी अमाउंट इन्वेस्टेड में क्या करेंगे? एड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे. करेक्ट? एंड लेस शेयर ऑफ लॉसेस करेंगे. शेयर ऑफ लॉसेस करेंगे. बट प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या रेट पे एडजस्ट होंगे? 70-30. 70-30 क्यों करेंगे? Just 30%. Just 30%. Okay, we will always do it at 30% because we have invested 30%. So why would we get 70%? Now, if you have invested 30%, we'll only get 30%. Okay. Let us see then. क्या बोला है? Same paragraph. At that date, Street had retained earnings of 25,000 and no other components of equity. ठीक है? They had retained earnings of 25,000 and no other components of equity. So on acquisition date, उनका total reserves कितना था? 25,000 का. Okay. And on reporting date, उनका total reserves कितना था? 40,000. 40,000 था ना? Okay. So on acquisition date, reserves of company, reserves में दोनों लेंगे हम लोग. Retained earnings भी लेंगे, other components of equity भी लेंगे. So on acquisition date, the reserves was 25,000. Okay. And on reporting date, it is given in the balance sheet. On reporting date, the total reserves of Street company, associate company, is 40,000. 40,000. Okay. So post acquisition profit कितना हो गया? 15,000 will be 15,000. And share of profit will be what? 30%. 5. So 15,000 into 4,500. 2,500. 2.5. Okay. So that's the first effect. 4,500. ये first effect आ गया. Second effect कहाँ डालोगे? Group reserve. Correct. Group reserves में जैसे subsidiary का profit share किया, in the same way add share of profits of Associate. 4,500 प्रॉफिट है, ऐड करेंगे. प्रॉफिट है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे. सर वर्किंग नोट बनाने के कितने मार्क्स हैं? डिपेंड करता है. पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स को आया तो वर्किंग नोट्स विल कैरी 4 मार्क्स. ओके. ठीक है. सो डन क्लियर एवरीवन? दिस क्लियर? Yes. ओके. तो इसमें बाकी पर्प वगैरह कुछ है क्या? देखो एसोसिएट और पेरेंट में कुछ और एडजस्टमेंट बचा है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो. पर्प है क्या? नहीं है ना? नहीं. ओके. डन. फिर हो गया. कर देते. क्लोज कर दो. वर्किंग नोट 5 क्लोज कर देते. एनसीआर तक तो हो गया था अपना. सो ग्रुप रिजर्व्स कैरिड टू बैलेंस शीट. Group reserves carried to balance sheet. $190 to $500. Okay. Group reserves carried to balance sheet is $190 to $500. And investment in associate भी close कर दो. Investment in associate. Share of loss तो कुछ है ही नहीं. So investment in associate will be कितना आएगा? 25,500. 25,500. Done. Let us prepare consolidated balance sheet. Consolidated SOFP. Non-current assets. We'll start with non-current asset. क्या क्या नॉन करंट एसेट्स में दिया? देखो पीपीई दिया हुआ है. पीपीई दिया है पहले. ओके. सो पीपीई में क्या क्या लिखोगे? बरो, हाई और स्ट्रीट तीनों का लेंगे ना पीपीई? नहीं सर. तो किसका लेंगे? सिर्फ बरो और हाई का लेंगे. स्ट्रीट कंपनी एसोसिएट के assets and liabilities will not be consolidated in the balance sheet. So we'll take only 1,80,000.
Right? So 1 lakh 100,000 plus 80,000. एडजस्टमेंट है क्या देख लो, कुछ पीपी में कुछ एडजस्टमेंट था क्या? What was the adjustment? Fair value adjustment and depreciation. Fair value adjustment of 15,000 and that depreciation of 3,000 because it was all related to PPE. So 15,000 was the fair value adjustment. Fair value adjustment and minus 3,000 was your depreciation. 3,000 was the depreciation. Sir, can you please explain the fair value part once for the PPE? I'll explain it once again. Okay. So we'll go to fair value. Here again. Okay, here it was. So what was our figure? Our figure was share capital was 75,000, return earnings is 30,000 and OC is 0. ये तो दिया हुआ है, ये तो अपना प्रॉब्लम में दिया है. And what they had given, they did not give this fair value. They had not given this 15,000 का fair value. But instead what they had given, High's net asset had a fair value. They had not said High's net asset adjustment had a fair value of 1,20,000. If they had said High's net asset adjustment has a fair value of 1,20,000 or they can use High's net asset excess was 1,20,000. तो हम लोग ने क्या किया रहता? Fair value adjustment ही 1,20,000 का लिया रहता. But in this problem they have clearly said High's net asset, the total net asset has a value of 1,20,000. So ये तो acquisition date का दिया है, on 1st July they have given. Okay, so they have given this 1,20,000 as the net assets of subsidiary company. So if the total is 1,20,000, fair value adjustment will be what? 1,20,000 minus your equity and reserves. So 15,000 will be your fair value of PP. वही fair value हम लोग बैलेंस शीट डेट पे भी लेंगे एंड उस fair value का 15,000 का depreciation निकालेंगे and not depreciation on 1,20,000. But sir, उन लोगों ने adjustment में दिया है that it is related to PP, so we won't compare 1,20,000 with the PP of High. See, PP is how much? PP is 1 lakh. Okay. Have they said PP का fair value is 1,20,000? ऐसा बोला है क्या? No. नहीं ना. If they had said PP का fair value is 1,20,000 on date of acquisition, तो fair value adjustment कितना हो रहता है? 1,20,000 minus 1 lakh, 20,000 would have been fair value adjustment. Okay. But they have clearly here, they have said net asset का fair value is 1,20,000. Not just PPE, पूरे net asset का fair value is 1,20,000. So that's why we are taken directly 1,20,000 over here. Okay. If they had said fair value of PP is 1,20,000, so this would have been 1,20,000 minus 1 lakh. Correct ना? ऐसा हुआ रहता फिर वो 20,000 आया रहता. Okay. But they have said that it is a net asset का fair value is 1,20,000. Clear? Yeah. Okay. Next. So when we prepare the balance sheet, we'll take these two. 15,000 is the additional amount, 3,000 is the depreciation amount. So when we prepare SOFP, PP is दोनों कंपनी का PP, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस 3,000 का डेप्रिसिएशन. तो कितना आया? 32,000. 32,000 कैसे आया रे? 1 लाख में सॉरी मैंने माइनस कर दिया. अरे हाँ माइनस 3 मैंने माइनस 1,92,000. 1,92,000 आया. Okay, so another doubt is adjustment 4 में what is the $5,000 amount of intragroup? Okay, intragroup means what? Intragroup means receivable is showing 5,000 and payable is showing 5,000. Okay, so parent company shows receivable of 5,000 and subsidiary company shows payable of 5,000. But when I consolidate parent and subsidiary company ka books, what happens? Receivable is netted off or nullified by the payable. So whenever there is an intragroup transaction, always remember deduct that intragroup amount from receivables also, deduct that intragroup amount from payable also. So that directly doing balance sheet. Yes. Sir, if the intragroup here was between Borough and Street, then we would have to show the 5,000 in receivables. हाँ देखो Borough and Street में हो गया. If the intragroup receivables are between Borough and Street, then consolidation हो ही नहीं रहा. Bro, no. If it is between parent company and associate, there is no consolidation.
If there is no consolidation, you cannot eliminate intra-group transaction. Okay. Okay. So that receivable will still appear in Burrows company. ये 5,000 को less नहीं किया रहता. Okay, sir. Got it. Okay. It is only the concept of consolidation where elimination of intra-group happens. Okay. Between Burrow and Street, there is no consolidation, so no need to eliminate those balances. Okay. Next. ये लिख लो सब लोग, तुम लोग जो भी डाउट्स आ रहे बाकी लोगों के, others also write it down. तो मलार वाला डाउट एक बार वापस एक्सप्लेन करो, क्लियर नहीं हुआ. कौन सा? मलार ने अभी जो डाउट पूछा ना बरो स्ट्रीट वाला. See, if parent company and subsidiary company have intragroup balance, ठीक है. इंट्राग्रुप बैलेंस में क्या क्या हो सकता है बताओ मेरे को. It can be between receivables and payable, okay. Or it can be between cash and bank. It can be a cash in transit. Okay. Or it can be between your investment in securities of subsidiary company other than equity shares, right? So these three balances, okay, we have to eliminate these three balances from consolidated balance sheet, from consolidated SOFP. Okay. But if the same balances are between parent and associate, okay, since there is no consolidation, okay, no need to eliminate these balances, right? And your receivables will remain unaffected. And also payables also. So, and receivables and payables will remain unaffected. Clear? Okay. स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका? हाँ सर, वही ले रहे हैं. Okay. Next. So PP is done. आगे का कौन सा अपना इन्वेस्टमेंट तो अपन ने कर दिया. 1,21,000 we have shown. 1 lakh in your holding, subsidiary, and 21 in associate. Inventories. So inventories is 22,000 plus 30,000. ये 15,000 तो नहीं आएगा. But perp is there ना? Perp is there. So we'll adjust for perp. So before going to inventory, let us complete our NCA. NCA में और क्या क्या बचा है? नॉन करंट एसेट्स में गुडविल बचा है ना? Before you go to inventory is a current asset. So let us complete NCA non-current asset. So how much was goodwill? After impairment 28,000 लेना है हम लोगों को. After impairment we have to take 28,000. Anything else is remaining in non-current asset? So investment in associate. Correct. Investment in associate, वो भी तो long term हो गया ना? Investment in associate, even that is a long term figure. So 25,500. So 25,500 that we have calculated already. Investment in associate is 25,500. हो गया non-current assets पूरा. So now we can go to current assets. Inventory. So inventory will be how much? Inventory is 22,000 plus 30,000. So 22,000 plus 30,000 and minus perp. Perp is how much? 1,000 का perp है ना? 1,000 perp. So कितना आ गया? 51,000. Next. After inventory there is receivable. Receivable में कुछ adjustment है क्या? पर intra-group है ना? Intra-group transaction is there, so we'll adjust for that also. Receivable will be 70 plus 10 minus intra-group.
So receivables will be 70 plus 10 minus intragroup is how much? 5,000. It's 5,000 intra group. Okay. So 75,000. And then कैश में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? कैश इन ट्रांजिट वगैरह कुछ है क्या? देख लो. नहीं है. So cash will be 47 plus 25. So cash and cash equivalent will be 47 plus 25. Okay. कितना हो गया वो? 72,000. Done. Take the total of assets. $443,500. So assets is $443,500. Liabilities लिखते हैं. नॉन करंट लायबिलिटी. शेयर कैपिटल कितना आएगा? फेस वैल्यू पे आएगा. So share capital will be only borrow share capital will show. High and street का share capital नहीं दिखाते हैं. So only borrow share capital. So equity. How much is the equity? 1 lakh. Equity is 1 lakh. Then next, retained earnings. Instead of retained earnings, we can directly show group reserve. We can directly show the group reserve amount. How much was that amount? 1,92,500 was the group reserves. 192,500 is the group reserve. Okay, next. नॉन करंट लायबिलिटी में और कुछ बचा क्या? देखो, what is remaining? NCI is remaining, right? Non-controlling interest is remaining. That also we have calculated. NCI. 61,000 is the NCI. Okay. So non-current liabilities is done. Calculate the current liability. Current liabilities में क्या क्या है? So first current liabilities में सिर्फ liabilities दिखा है उन लोग ने, but liabilities में दो adjustment अपने. So liabilities will be 50,000 plus 15,000. 50,000. So I'll just write current liabilities, and then provision. So current liability is 50,000 plus 15,000. 50,000 plus 15,000 and क्या लेस करोगे? अपना इंट्राग्रुप ऑफ 5,000. इंट्राग्रुप ऑफ 5,000. So कितना आया फिर वो? 60,000. 60,000. Okay, and provision working note जो भी अपना working note जो भी था 30,000. 30,000. Done. Take the total. $443,500. Sir, हाँ. Sir, could you once explain the adjustment effects for the downstream and upstream of PURP PERP for between the parent and the associate? सेम होगा ना. parent and associate में अपना जब भी whenever we calculate our PERP, okay, if parent company is a seller, what are we going to do? We are going to adjust between what? We are going to adjust between group reserves, okay, and then we are going to adjust between associate. Same logic applies for your upstream also, na? Sir, so upstream what happens to the inventory part, sir? Because we are not consolidating, so we don't subtract inventory. No, we'll not subtract from inventory. Why? Because अपना देखो first effect क्या रहता है? I'll just tell you. First effect normal parent और इसमें parent and subsidiary में first effect is deduct from inventory, less from inventory, right? Less from inventory. And second effect is either in your group reserve, correct, or अपना net assets of subsidiary.
करेक्ट ना, ये हो गया बिटवीन parent company and subsidiary company. This is between parent company and subsidiary company. Okay, now if it is between parent and associate, if it is between parent and associate, first effect would reflect in less from inventory. ऐसा हुआ रहता, less from inventory of associate, correct? But associate का inventory दिखाने ही नहीं वाले हम लोग. We are not going to show associate का inventory in our consolidation. So instead of that, what will we do? Less from investment in associate. Associate का कुछ भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन है किस में डालना है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के वर्किंग नोट में डालना है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड. एसोसिएट का कुछ भी असेट हम लोग लाने नहीं वाले. ओके, सो इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग द असेट्स ऑफ एसोसिएट, okay, so perf will also not be adjusted in inventory of associate, instead it will be adjusted in investment in associate. Correct? Okay sir, okay. And second effect तो simple है. second effect तो अपना भी between parent company and associate तो group reserve में adjust, will adjust in the group reserve. Okay, Yes sir. clear? Sir, if there is a provision for the subsidiary company, so same effect will come, no? In current liabilities? करेक्ट, क्योंकि सब्सिडरी का बुक्स भी तो बना रहे हैं ना हम लोग. बट यहाँ पे एक मिनट, इफ देयर इज प्रोविजन फॉर सब्सिडरी, प्रोविजन फॉर नॉट पर्पा, अदर प्रोविजन आई एम सेइंग. ओके, तुम्हारा डाउट भी अदर प्रोविजन का ही है ना? हाँ, अदर प्रोविजन ऑफ सब्सिडरी कंपनी है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट विल बी obviously reflect in current liabilities and provisions, वो तो आएगा ही. एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? Net assets. हाँ, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट देखो, अगर सब्सिडरी का P&L अफेक्ट होता है तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी में डालो. अगर पेरेंट कंपनी का P&L अफेक्ट होता है तो ग्रुप रिजर्व में डालो. और अगर एसोसिएट का कुछ भी अफेक्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में डालो. वही लॉजिक है ना? Yeah, okay. ओके, वो लोग प्रोविजन एसोसिएट के लिए नहीं देंगे ना? नहीं देंगे. प्रोविजन ऑफ एसोसिएट है तो हम लोग क्यों करेंगे? प्रोविजन ऑफ एसोसिएट तो एसोसिएट के P&L में जाएगा जो हम लोग नहीं दिखाते, एंड एसोसिएट का लायबिलिटीज में जाएगा जो भी हम लोग नहीं दिखाते. ओके, ठीक. अभी देखो, टिल ऑल दीज प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वैल्यूइंग fair value of, sorry, we are valuing the NCI at fair value. We are valuing NCI at fair value, correct? So either वो directly दिया होता है, और अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट एमपीएस करते हैं ना? याद आ रहा है क्या? हाँ, मार्केट प्राइस पे करते हैं. Correct. So if NC we want to calculate the value of NCI, it is at fair value, then it is already given to us in the problem, like this problem, or we calculate number of shares of NCI. So number of shares of NCI into current MPS. Okay, but sometimes they will say NCI is to be valued at valued as per net asset method. Okay, what will you do? तो जो वैल्यू नेट एसेट में आएगी वही एनसीआई की होगी. वही है, पूरी की पूरी एनसीआई को दोगे? गुड नहीं. सो फॉर एग्जांपल होल्डिंग का परसेंटेज है 80%. ओके, एनसीआई का परसेंटेज है 20%. ओके, एंड दे हैव सेड एनसीआई टू बी वैल्यूड एज पर नेट असेट मेथड. ओके, एंड हम लोग ने वर्किंग नोट 2 में हम लोग ने निकाला है नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, ऑन एक्विजिशन डेट एक करते हैं अपन, एक्विजिशन डेट पे एक करते हैं, एंड एक रिपोर्टिंग डेट पे करते हैं. तो लेट अस से एक्विजिशन डेट का है 1 लाख एंड रिपोर्टिंग डेट का है 1,20,000. ऐसा हम लोग ने ऑर्डर निकाल दिया है. एंड नाउ वी आर मेकिंग आवर गुडविल और कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट. ओके, तो उसमें जो एनसीआई एट फेयर वैल्यू लेते थे, सो नाउ यू हैव टू टेक एनसीआई टू बी वैल्यूड एज पर द नेट एसेट मेथड. सो टेल मी
what is the fair value, sorry, what is the value of NCI? Value of NCI 20,000, correct, because net asset on acquisition date लेंगे, so that will be net assets on acquisition date, क्योंकि गुडविल भी तो एक्विजिशन डेट का निकाल रहे हैं ना आप लोग, इनटू एनसीआई का वैल्यू लेना है, एनसीआई का वैल्यू इज 20%, so into 20%, so into NCI percentage into percentage holding of NCI, percentage holding of NCI, right? So that will be 1 lakh into 20%. So 20,000 will be your value of NCI, 20,000 will be your value of NCI. ठीक है. So NCI का वैल्यूएशन you just have to read properly कि NCI का वैल्यूएशन क्या बेसिस पे होने वाला है. What is the basis for valuation of NCI? Sir, so matlab when we are doing the goodwill, that means the goodwill calculation will basically be for only the parent company का fair value, right? Because NCI का है तो it's net asset method. तो क्या हो गया, तो अपना गुडविल के कैलकुलेशन में क्या आएगा, गुडविल के कैलकुलेशन में आएगा ना 20,000. गुडविल के कैलकुलेशन में क्या करेंगे अपन, विल स्टार्ट विथ फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट कंपनी, और जो एक्चुअल पेड किया है हम लोग ने वो तो लेंगे. फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एनसीआई एज पर नेट एसेट मेथड लेंगे ना. देखो वो बचे हुए 20% को कुछ तो पैसा देना है ना तुम लोगों को, बचा हुआ 20% को कुछ तो पैसा देना है, तो ये पेएबल भी है, तो भी ये 20,000 आएगा ना यहाँ पे. इवन फेयर वैल्यू पे नहीं है, पर 20% बचे हुए लोगों को हम लोग को एट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कुछ तो अमाउंट विल बी पेएबल, सो दैट अमाउंट शुड आल्सो कम. सो दैट विल गिव मी टोटल पेएबल, दैट विल गिव मी टोटल पेएबल, और उसमें से क्या करो, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट निकालो, नेट एसेट ऑफ सब्सिडी ऑन एक्विजिशन लेस कर दो. So that will give me my goodwill or capital. Sir, so when impairment happens, we still we don't show it in NCI, ना? हाँ, अगर impairment होगा तो 100% impairment होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वो सब्सिडरी में डालेंगे. हाँ, करेक्ट ना. अदरवाइज हम लोग को impairment of goodwill तो दिखाना ही पड़ता है ना. Only on impairment of goodwill at 100%, करेक्ट, हम लोग उसको एडजस्ट नहीं करेंगे. Sir, if it's partial, right? Then the impairment, do we split between NCI and fair value, या फिर सिर्फ पेरेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाँ, अभी अगर नेट एसेट मेथड रहेगा, नेट एसेट मेथड ऑफ एनसीआई रहेगा, then we will not split that goodwill between holding and NCI. Okay. करेक्ट, बिकॉज एनसीआई को हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेशन निकाल के दिया है. नेट एसेट मींस व्हाट, नेट एसेट मींस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. ओके, नेट एसेट्स मींस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, सो दैट टाइम इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल विल नॉट बी स्प्लिट बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सॉरी होल्डिंग एंड एनसीआई. करेंगे हम लोग, उसका एक प्रॉब्लम बाद में कर लेंगे अपन, जब व्हेन वी विल डू P&L मेथड, दैट टाइम वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, clear to everyone? Yes sir. ठीक, चलो और कुछ करना है क्या आज, या आज के लिए बस हो गया, वीकेंड है तो आज के लिए काफी है. बस हो गया. होमवर्क वगैरह दे दो. होमवर्क दे देता हूँ मैं तुम लोगों को. आई सेंड. ओके, थोड़ा सा टफ लेवल का होमवर्क दूं क्या तुम लोगों को? चलेगा सर, पता तो चलेगा कितने डूबे हुए. एसबीआर का होमवर्क दूं क्या, एक करोगे क्या? ट्राई करने में क्या जाता है सर. ठीक है, क्योंकि एसबीआर का जो बेसिक सम है वही तुम लोगों को यहाँ पे एडवांस सम करके आएगा, है ना. चलेगा सर, एक बार दे दो. कंसोलिडेशन ऑफ एसोसिएट. सर एक चीज और मेरे दिमाग में है, कोई एक क्वेश्चन जिसके अंदर A to Z जितने भी आपने एडजस्टमेंट सिखाए हैं हमको, मास्टर क्वेश्चन नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते, क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के दोनों एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में कैसे आएंगे ना. फिर वो फेयर वैल्यू के भी अपना फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन आइदर इन कैश और इन कैश शेयर्स एंड डिफर्ड कंसिडरेशन साथ में नहीं आ सकते. इट कैन बी आइदर और ना. तो फिर सर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन सकते हैं ना जिसमें हम लोग कहीं पे उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं. हाँ, इसलिए तो पूछा ना, एडवांस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना.
ठीक है, we'll solve one advanced question which will have all the adjustments. Okay, ठीक है. Is there a test on Monday? क्या करना है? मंडे को टेस्ट रखना है क्या? ट्यूसडे कर लो. क्यों ट्यूसडे? क्यों? थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा. सर मंडे को अराउंड 11:15 we have company law का टेस्ट for 5 to 10 minutes maximum. अच्छा, तो तुम लोग 11:30 को आओगे क्या फिर क्लास को? सर we'll try to come before that because मैम ने उस टाइम पे रख दिया है अभी, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा. 11:20 को शेड्यूल करते हैं मंडे का क्लास. ओके चलेगा. सर. हाँ, we'll take the Monday class on 11:20. ओके सर. And test will keep it on Tuesday. ठीक है, टेस्ट will keep it on Tuesday. चलेगा सर. डन. ठीक है, मतलब मंडे के टेस्ट के बाद इमीडिएटली और एक टेस्ट नको तुम लोगों को. ठीक है. ओके, चलो. So that's it for today. Okay, I'll send a homework problem. Try that problem. Thank you. Okay.